Namaste Gurukulians, I hope you all are fit and fine. I am Atul, and in today's lecture we will do the concept of advantages of parallel combination, and after that we will do the heating effect of current. Clear? Okay, in the previous video you have learnt about series and parallel combination. On the basis of that combination, first of all I will do two numericals. देखिए, this is a circuit diagram. This is of 1 ohm, 6 ohm, 3 ohm. Clear? And this is of 3 volt. Okay, if you look at the diagram carefully, it is not a proper series combination and parallel combination. If you look at 6 and 3, they are in parallel. Clear? And the parallel combination of these resistances are in series with 1 ohm. Clear? How to solve such type of circuits? Clear? Now, in this we have to calculate R equivalent. Clear? Second, total current. Clear? Third, potential across 1 ohm, 6 ohm, 3 ohm. Clear? And fourth, current across 6 ohm and 3 ohm. Clear है? Okay, now first of all R equivalent देखेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व करेंगे. क्लियर? आफ्टर दैट इनका जो रिजल्टेंट आर आएगा उसको हम इसके साथ सीरीज में रखेंगे. देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, 6 एंड 3, 1 बाय आर, यदि मैं इसका आर इक्विवेलेंट निकालूं तो 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 3. क्लियर? सो 1 बाय आर इज इक्वल टू 18. This one, तो R is equal to 18 by 9. This is 2 ohm. तो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो कितना आया? 2 ohm. Then we can replace these two resistances by a single resistance having value 2 ohm. So resultant circuit is this one, 1 ohm, 2 ohm, 3 volt. Clear? So R equivalent, first part, R equivalent, they are in series combination. So 1 plus 2 ohm, it will be 3 ohm. Clear? So R equivalent we have calculated. Second, total current in the circuit. Total current according to Ohm's law, I equal to V upon R. Clear? So total current will be equal to total voltage divided by total resistance of the circuit. Total voltage is 3 volt. Total resistance of the circuit is 3 ohm. So it will be 1 ampere. Clear? Okay, third, potential across 1 ohm, 6 ohm and 3 ohm. ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल निकालते हैं. पोटेंशियल अक्रॉस 1 ओम. अच्छा, V इक्वल टू R इंटू आई. हमें 1 ओम के अक्रॉस चाहिए तो R की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? 1. आई की वैल्यू कितनी है? 1. तो 1 वोल्ट. करंट इस सर्किट में कितना है? 1 एम्पियर. तो 3 वोल्ट में से जो 1 वोल्ट है वो कहाँ चला गया? यहाँ पर. क्लियर है? तो रेस्ट 2 वोल्ट विल बी अक्रॉस 6 ओम एंड 3 ओम. क्लियर है? इट मीन्स
जो पोटेंशियल है 6 ओम और 3 ओम, या इनका जो रिजल्टेंट है 2 ओम। क्लियर है? यहाँ पर 1 ओम के क्रॉस कितना है मेरे पास पोटेंशियल 1 वोल्ट, तो 2 ओम के क्रॉस कितना बच गया, रेजिस्टेंस कितना है 2, करंट कितना है 1, तो 2 वोल्ट। क्लियर है? अच्छा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था 6 एंड 3 ओम का। क्लियर है? या तो आप रेजिस्टेंस को ऐसे लिख लो 6 एंड 3 ओम, या फिर इसको ऐसे लिख लो 2 ओम। क्लियर? सो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम मेरे पास है 2 वोल्ट। इट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस 3 और 6 ओम विल बी 2 वोल्ट। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो 1 ओम के क्रॉस कितना वोल्ट आया 1 वोल्ट, तो 3 में से 1 गया 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट किसके क्रॉस है 6 ओम एंड 3 ओम के। देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, इट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। क्लियर है? ओके, नाउ करंट अक्रॉस 6 ओम एंड 3 ओम, 1 ओम के अक्रॉस कितना करंट है 1 एम्पियर। नाउ 1 एम्पियर विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स I1 एंड I2। क्लियर है? सो नाउ करंट अक्रॉस 6 ओम, फोर्थ पार्ट करंट अक्रॉस 6 ओम, इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अच्छा, 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट डिवाइड बाय 6, इट विल बी करंट अक्रॉस 6 ओम। वन बाय 3 एम्पियर। क्लियर है? ओके, नाउ करंट अक्रॉस 3 ओम इज इक्वल टू 3 ओम के क्रॉस वोल्ट कितना है 2, तो V अपॉन R इट इज 2/3 एम्पियर। क्लियर? और करंट अक्रॉस 1 ओम हमें पता ही है, इट इज 1 एम्पियर। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इफ यू लुक एट दिस फिगर, ये ना तो प्योरली पैरेलल सर्किट है, ना ही ये प्योरली सीरीज सर्किट है। क्लियर है? इट इज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ पैरेलल एंड सीरीज। अच्छा, बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 3 वोल्ट मैंने यहाँ पर वैल्यू दी है, तो वो सोच लेता है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, तो इन दोनों के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा 3 वोल्ट। ये गलत है। इसके साथ 1 ओम भी अटैच है, तो 3 वोल्ट में से कुछ वोल्ट इसके क्रॉस जाएगा, जो रेस्ट वोल्टेज है विल बी अक्रॉस 6 एंड 3 ओम। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, एक और न्यूमेरिकल हमारे पास है कि अ स्ट्रेट वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, वी हैव बेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। नाउ वी हैव टू टेल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। ये देखेंगे एक बार, लुक, सेकेंड straight wire of resistance R is bent in form of circle. Calculate R equivalent between 2 diametrically opposite points. Okay, now for example this is a straight wire, इसका रेजिस्टेंस कितना है R, we have converted it in form of circle like this. Clear है? Okay, now 2 diametrically opposite point, let it is A, it is B. Clear? So if it has length L, so it has length L by 2, it is length L by 2. Clear है? R is the resistance of length L, so for L by 2 the resistance will be R by 2.
For this L by 2, resistance will be R by 2. If you look carefully at this portion and this portion, they are in parallel because they are connected at this point and they are connected at other point also. It means two common terminals are there in between one portion and second portion. Clear hai? It means the are equivalent. We can calculate with the help of parallel combination. 1 by R equivalent will be equal to 1 by R1. 1 by R1. R1 की वैल्यू कितनी है? R by 2 प्लस 1 by R2. R2 की वैल्यू कितनी है? R by 2. So 1 by R equivalent 2 by R plus 2 by R. So it is 4 by R. So R equivalent is equal to R by 4. Clear? Okay students, now we have a question that what are the advantages of parallel combination of resistances, or we can say that why we prefer to connect electrical appliances in parallel combination. Clear? Okay, advantages of parallel combination. Okay students, look at this figure. Okay, this is voltage V. Let it is first appliance, it is second appliance. If you look carefully at this figure, in parallel combination, each appliance works under constant voltage. It is the first advantage of parallel combination. In series combination, the voltage gets divided in between the appliances. So first, each appliance works under constant voltage, और constant voltage के सप्लाई जितनी हमने सप्लाई की हुई है वोल्टेज. क्लियर? सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स, इफ करंट इज I1, क्लियर? सो दिस अप्लायंस विल विथड्रॉ द करंट अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट. यहाँ पर करंट दो हिस्सों में डिवाइड होगा, I1 एंड I2. सो स्टूडेंट्स, ये दो हिस्सों में डिवाइड क्यों हुआ? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईच अप्लायंस will withdraw the current according to its requirement. लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट अक्रॉस ईच अप्लायंस विल रिमेन सेम. यदि मान लो यहाँ पे हमें करंट कम चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा चाहिए, ये पैरेलल में तो हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सो सेकंड, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन each appliance withdraws current according to its requirement. Clear? Third, okay students, for example, this is first and this is second. If by any fault this appliance stops to work, then there will be no effect on this appliance. Clear? यदि मान लो ये appliance by any fault काम करना बंद कर दे, करंट इसके क्रॉस तो फिर भी रहेगा. So this device will work as it was earlier. Clear? But in series combination, if you look carefully, यदि मान लो ये डिवाइस काम करना बंद कर गई, क्लियर है, देन करंट यहीं स्टॉप हो जाएगा.
तो ये भी डिवाइस ऑपरेट नहीं हो पाएगी। क्लियर? इट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट इफ बाय एनी फॉल्ट one appliance stops to work, then there will be no effect on others appliances. Clear, students? Due to this type of advantages of parallel combination in our houses, domestic electric circuits are operated under parallel combination. ये हमेशा ध्यान रखेंगे, घरों में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऑपरेट करवाया जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करवाया जाए। क्लियर? क्योंकि इसके कुछ एडवांटेज होती है जो सीरीज में फुलफिल नहीं हो पाती। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ we have a new topic, that is heating effect of current, very main topic regarding the concept of electricity. Up to now we have studied about the current, voltage and resistance. Clear? Now we will study about the heating effect. Heating effect means when we pass the current through a conductor, then it generates heat energy. There is a production of heat energy across that conductor, and this is known as हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मीन्स जब भी करंट किसी कंडक्टर के क्रॉस पास होता है तो बेसिकली करंट का एक इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट। तो कंडक्टर क्या हो जाता है, हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है। इन डेली लाइफ यू कैन ऑब्जर्व दिस लाइक इलेक्ट्रिक फैन। इफ़ यू अलाउ टू वर्क इलेक्ट्रिक फैन फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन यू विल फाइंड दैट आफ्टर some time it becomes hot. It produces heat energy if you go nearby to it. Clear? तो बेसिकली वहाँ पर हो क्या रहा है, जो हमने सोर्स एनर्जी फैन को दी, सम एनर्जी गोज टू मेंटेन द करंट अक्रॉस दैट फैन, और यू कैन से दैट सम एनर्जी गोज इनटू यूजफुल वर्क टू रोटेट द wings of the fan. Clear? But rest of the energy dissipates as heat energy. Clear? So जब भी हम कंडक्टर की बात करते हैं उसके क्रॉस करंट को हम प्रोड्यूस करवाते हैं, तो कुछ एनर्जी तो कहाँ जाती है टू मेंटेन दैट करंट, और यू कैन से दैट यूजफुल वर्क के लिए, और जो रेस्ट एनर्जी है वो कहाँ चली जाती है, हीट की फॉर्म में। सेकेंड, if your circuit is purely resistive, that resistance is very high, then whole electrical energy which you are supplying to that appliance will get converted into heat energy. If you look at the concept of electric iron, geyser, immersion rod, that appliances have very high resistance, and if you pass the current through them, then you will find that होल एनर्जी डिसिपेट्स एज हीट एनर्जी। तो बेसिकली एक बार यहाँ पर हमें ध्यान देनी पड़ेगी। यदि आप एक एग्जांपल लेते हो इलेक्ट्रिक फ़ैन का, आप वहाँ पर कहोगे कि सर कुछ एनर्जी तो हीट एनर्जी में डिसिपेट हो रही है विच इज़ नॉट यूजफुल टू अस, बट इफ़ यू लुक एट द सेकेंड एंड इन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, दिस हीटिंग इफेक्ट इज़ बेनिफिशियल। क्लियर? बिकॉज in that appliances the maximum energy, or we can say that whole energy, gets dissipate as heat energy, which is beneficial for us. Clear? So students, now heating effect of current. क्लियर? इसमें लिखेंगे द प्रोडक्शन ऑफ या जनरेशन ऑफ हीट अक्रॉस अ कंडक्टर व्हेन करंट passes through it. Clear? If you have any electric appliance like
fan. Source energy. Clear? Okay, here some energy goes to maintain the current. Clear? Or you can say that in useful work to rotate the wings of the fan, but rest energy goes, dissipates as heat energy. Clear? But if circuit is purely resistive, then whole source energy dissipates as heat energy. Clear? And this type of phenomena we utilize in electric iron. Clear? Electric heater, because in that appliances we need the heat generation. Clear? So students, now we will find the expression for heat energy in the circuit. Okay, look. Okay, you have a conductor having resistance R. I is the current in the circuit under the potential V. Clear? Okay, now under this potential difference, ये जो सोर्स बैटरी हमने लिया है, ये क्या कर रहा है? चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मूव करवा रहा है. तो वर्क डन बाय सोर्स टू मूव charge Q from one terminal to second terminal under potential V will be equal to Q into V, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? W अपॉन Q. तो W की वैल्यू क्या आएगी? Q into V. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क टू मूव चार्ज Q अंडर द potential V is equal to Q into V. Clear? So work is equal to Q into V. Now if or this is equivalent to electrical energy. Clear? Okay, now if circuit is purely resistive, then देखेंगे यहाँ पर सोर्स बैटरी ने कितना काम किया? Q इंटू V. तो वही तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. क्लियर? यदि ये सर्किट प्योरली रजिस्टिव है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में डिसिपेट हो जाएगी? हीट एनर्जी में. इफ सर्किट इज प्योरली रजिस्टिव, देन दिस energy will dissipate as heat energy. Clear? So students, look, we can write heat energy H is equal to Q into V. Clear? Okay, charge is equal to current into time. I is the current in the circuit, T is the time for which current is passing in the circuit.
Clear? Okay students, VIT, according to Ohm's law, we can write V equal to RI. ये clear है? Then it will become this one. In place of V, I have written RI. Clear? So it will become I square R into T. This is the expression for heat energy in the circuit. Clear? Second, this is the famous Joule's law of heating. Joule's law of heating. In heating effect, we have this law. According to this law, if I is the current in the across a conductor for time t, then heat energy across that material या conductor depends on square of the current, resistance of the conductor, time for which the current passes. So according to Joule's law of heating, the heat energy generated across a conductor depends on first, depends first directly on square of the current, square of current across it. Clear? Second, directly depends on resistance across the conductor, directly on resistance of the conductor. Third, directly on time t, on time t for which current passes in circuit. Clear students? Now this formula we have to remember because in the numericals we will use it. So heat energy depends on the square of the current, on the resistance of the circuit या conductor and time for which current passes across that conductor. Okay students, based on heating effect, one numerical is there. Look, page number 217, example number 12.11. In this example, 100 joule of heat is produced each second in a 4 ohm resistance. So 100 joule heat energy given है, in each second time given, resistance 4 ohm given. Find the potential difference across the resistor. Okay students, look, this is the 4 ohm resistance. Clear? Potential difference we have to calculate.
If you want to know the potential difference, then you need to know current and resistance. Resistance is given to us and we have to find current. Heat energy given as 100 joule. Time 1 second. Clear? And resistance is 4 ohm. So students, first of all, what we will do? We will calculate the current with the help of heat energy concept. We know according to Joule's law of heating, H equal to I square R into T. H is 100 joule. I we have to calculate. R is 4 ohm. Time is 1 second. So I square is equal to 25. 100 over 4. So I equal to 5 ampere. Current we have calculated. Resistance we have. Now from Ohm's law, V equal to Ri. R value is 4 ohm. I value is 5. So it is 20 वोल्ट. तो इसका मतलब समझे, यदि आपके पास 4 ओम का कोई रेजिस्टेंस है, वोल्टेज उसके क्रॉस 20 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस 1 सेकंड में कितनी हीट एनर्जी डेवलप हो रही है? That is 100 joule in 1 second. Clear students? Now it is all about that is heating effect of current. I hope that it is sufficient for the today's lecture. In the next video, we will do the practical applications of heating effect in our daily life. For example, in electric iron, in electric heater, in electric bulb. Clear? Then after we will do the concept of power. That will be the last topic of this chapter. So students, have a nice day and thank you.